Good evening, every single one, and how are you doing? Good evening, good to see you. Welcome back to my class and my batch of 2022. Today we are going to try and finish this chapter and have a great time while we are doing this. कैसे हो आप लोग सब? How are you doing? Good evening, had your dinner, had your lunch, ready for the class. I can see that most of you are very, very excited for the class. Good evening, चलिए शुरू करते हैं. Human health and disease. And in today's class, we are going to do all these subtopics. And mind you, they are very, very important. बहुत important है. तो अपनी note copies open कर लीजिए. We will start from exactly where we finished in yesterday's class. If there is any problem that you have, any problem whatsoever, you need to get in touch with me. And how exactly you're going to get in touch with me? That's my official Instagram account. I have my Telegram account. You have the comment section here. If you're a long-term student, you can get in touch with me on the email which is provided to you. You can chat with me and I promise to solve all your problems. Tomorrow at 5, I'm going to do exchange of gases and transport of oxygen and carbon dioxide. I will also do neural control and coordination. But obviously, tomorrow 9 p.m. is going to be a very important session because I will give you a list of entrance exams after 12th. Some of the forms are already going to be out and you will be surprised that Jan, Feb, May, all the forms are going to be out. So the list of all the entrance exams after class 12th, you know, apart from AIMS, NEET, ये जो common exams हैं जो सब देते हैं, all of these I'm going to be giving you in tomorrow's class and you must not forget, right? It's going to be a very, very important session. So don't forget to like, don't forget to share, don't forget to subscribe, become a part of Vedantu BioTonic right now. Before I actually move forward, right? Before I actually move forward, I want to tell you something very personal. Should I tell you a story? Yes, can I spend 5 minutes in trying to tell you a very personal story? Pakka promise? बुरा तो नहीं मानोगे that Vani Ma'am आज कहानी सुनाने लगी है. It's a very, very personal story. I just take 10 minutes to tell you a story. See, don't get me wrong. कि आप पढ़ाई कैसे? But this is a very important thing which I'm telling you. And it actually means a lot. देखो होता पता है क्या है? For anybody, and this is like my story, right? आज मुझे कहानी कैसे याद आई? Today somebody joined Vedantu. There's one of the oldest teachers of Vedantu. I had to, you know, induct the person. I had to get the person. I had to onboard the person. So I had to talk to the person. So I started to tell my story. And from that person started to tell his story. And both of us were these small town people. So हमारी, you know, अपनी कहानियाँ सी सुनाने लग गए. Yes, अरे वाह Ayan, that's so super amazing. But I will talk about that comment later. See, if you are a small town person, raise your hand. If your parents look at you as somebody who will change the entire family situation, raise a hand. If you are somebody who wants to do a lot of things for your younger brother and sister, raise your hand. If you don't want your parents to work after you start earning, raise your hands. If you really want to change the world, do big things, treat people for free, raise your hands. I am 100% sure that any child who wants to become a doctor, जो रात के 9 बजे टाइम पास किए बिना यहाँ बैठकर पढ़ रहा है, they are not here for time pass. They are here because they really want to do something big. How many of you छुप के अपने से 2 साल 3 साल बड़े सीनियर जो कहीं डॉक्टर बन गए हैं या किसी बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियर बन के उनकी फोटोज देखते हैं और सोचते हैं किसी दिन हम भी ऐसी फोटो डालेंगे? Yes, how many of you feel कि यार कितनी बार सोचते हो और जिस दिन रिजल्ट आएगा you must be dropping for the second time or it must be your fresh year, but you know there are so many moments in a day you just close your eyes and you're like यार क्या दिन होगा जिस दिन हमारा रैंक आएगा. And you know, to be very honest, it is not that you are not working hard.
यू आर वर्किंग हार्ड, बट समवेयर ना उस ड्रीम में और अभी प्रेजेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू टेल यू जेन्युइनली, आपसे 5-6 घंटे की पढ़ाई हो ही नहीं पाती. You are absolutely Gun. Amar, you are kind of unable. Amar is a long-term student, so he can be an exception. He has the entire support of Vedantu. But for others, आप जब 4-5 घंटे पढ़ने बैठते हो, सच बोलना, दिल पे हाथ रख के सच बोलना, you are studying for half an hour, 40 minutes and you get stuck. और वो तब ऐसा फंसते हो कि जिस जगह पर फंसे हो ना, उसको ओवरकम करने में 2 आवर्स लग जाते हैं. एंड जब उसको ओवरकम करने लगते हो ना, देन देखते हो यार 3 घंटे वेस्ट हो गए. शिट, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जहां अटक गए ना बेटा, उस एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे, जहां पर वो कॉन्सेप्ट ना रौनक शायद 5-6 मिनट में सॉल्व होना चाहिए. यस और नो, शायद सिर्फ 4-5 मिनट में मैं पढ़ा दूंगी बेटा, मैं पूरा सिलेबस करा दूंगी, मुझ पे विश्वास रखो. आई एम देयर फॉर यू. मैं पूरा सिलेबस 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार बायो करवा दूंगी. आई एम देयर, डोंट वरी अबाउट इट. राइट, आई विल मेक श्योर कि जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले 20-30,000 एमसीक्यूज आपको करवा दो. टेंशन नॉट. यस, आप इधर यूट्यूब पे जाते हो, उधर यूट्यूब पे जाते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, फाइनली अटक जाते हो. आपको समझ ही नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करूं. और उस चक्कर में, और अगर उसको अनसॉल्व करके आगे बढ़ते हो ना, उसको सॉल्व नहीं किया और आगे बढ़ गए, तो वो दिमाग पे रहता है. It stays as a heavy burden on your head that shit, I have missed this, especially in physics, especially in chemistry. Yes. So doubts. I always use the word termite. वो अंदर से खोखला कर देते हैं. They are termites, doubts. Number 2. Randomly, and this is my challenge, this is my open challenge to you. Randomly, any topper video pick up. Any topper video. Minimum, they would have given 50 tests. 50. It is like my open challenge. They will not accept it. They may or may not accept it. They would have given at least 45-50 tests. How many tests have you given? I'm just talking about 2 things. How many they would have given? Start giving tests. Please, biotonians, mascots, full syllabus, part syllabus, topic wise, do test. Thank you, Gian. Do test. Analyze karo. And how many of you are still, in spite of the fact that today is 20th January, I am after your life from the beginning, how many of you have still not covered the entire syllabus? Yes? How many of you have still, why are you not covering your weak topics? You have to cover, pick up your weak topics, your weakest topics of physics and chemistry, and get after them. Get after them, guys. This 2022 is the last year you are sitting for this exam. I don't want you to repeat. Do you want to repeat? This 1 year with uncertainty, Omicron आए, पता नहीं Deltacron, Procron, Mocron कौन आ जाए. Do you want to sit for 1 more year? Do you want to waste 1 more year dreaming? Do you want to sit for 1? No, you have to finish 11th. You have to finish 12th. Backlog, shacklog सब अब करना है. अगले 4-5 महीने में सब कुछ खत्म करना है. A to Z, everything has to get over. And guys, जितने भी बच्चों के पास प्रो मेंबरशिप है, प्लीज इधर आइए. Just look at this. प्लीज इधर आइए. एक वीडियो लेक्चर को रिप्ले करके देखो. ये देखो, मैं आपको 11th पूरा मैं रिवाइज करवा रही हूँ. देखो, there are quizzes. हर एक क्विज के बाद लीडर बोर्ड. राइट, किसने कितना करेक्ट किया है, कितने क्विजेस है क्लास में, एक चीज रिवाइज करके देखो.
राइट बच्चे अनम्यूट होंगे क्लास में, अनम्यूट होके अपने डाउट्स पूछेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये देखिए, सो डोंट वेट। क्या लिखा है मैंने बता दो। राइट प्लीज जितने भी बच्चे हैं जिनके पास प्रो मेंबरशिप है, आइए क्लासेस में। ये देखिए अनम्यूट होइए, देखिए ask doubts in the class, get unmuted in the class. See here, never more than 100 students. रोज मैं नया लेक्चर दिखाती हूँ, कभी भी 100 बच्चों से ज्यादा नहीं है। See the number of quizzes, see the engagement, see the number of quizzes in the class. काउंट भी नहीं कर पाओगे इतने क्विजेज हैं क्लास में। Can you see it? ये नहीं दिख रहा है? I will talk about my book also, guys. मेरी बुक की टेंशन मत लो अभी। Look here. Yes. So this is very important, guys. This is very very important. Please ये सारी चीजें करिए. This is the minimum that I want you to do. Will you do it? प्रॉमिस करो मुझे अभी कि ये चीजें जो मैंने बोली हैं आज, आपको 3 पिलर बोले हैं मैंने। कौन से 3 पिलर्स हैं? यू विल डू द डाउट्स, यू विल फिनिश योर सिलेबस, सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाओ आज से। राइट, आई डोंट वांट इवन वन चाइल्ड टू कम बैक। यू विल फिनिश योर डाउट्स, यू विल गिव टेस्ट्स, सारे डाउट्स खत्म करोगे, यू विल गिव टेस्ट एंड आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। 20th Jan हो गया है, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेस्टिंग इवन वन सिंगल मोमेंट। एम आई राइट? Am I right here, everybody? Yes. And अगर आपको लगता है डांट पड़ रही है यहाँ पे, नाम लेती हूँ मैं, डांटती हूँ बच्चों को। राइट, तो आप इधर आ जाओ। सो व्हाट डू आई हैव टू टेल यू? ये रहा। राइट, इफ यू फील द नीड, there are new batches which start every week। 17 Jan को भी new batches start हुए। 1200 selections बेटा, which online institute can tell कि 1200 selections निकले हैं? 23 को कौन मेरा बच्चा पार करके दिखाएगा? I want single digit rank। Ayan, can you do it for me? Gian, will you do it? Princy, will you do it? Ronak, all India rank 4, all India rank 5, right? Amar, yes, short notes पेपर पे बनाइए, short notes NCERT पे बनाइए, do it। And guys, देखो, crash course is a way to do it। If you cannot do it on your own, this should be your way to do it, but at least learn from it। What are we doing? खुद struggle करते हो, अगर नहीं हो रहा है, join it। You know, जिस pace पे करना है उस pace पे होगा। The full syllabus will be revised। And बाकी जगह आपको लग रहा होगा मैम वहां पर तो 1200 का 1500 का रिकॉर्डेड है। दिस इज लाइव क्लासेस। There is a world of a difference between recorded and live। You can stop, you can interact, you can ask, you solve questions, you solve doubts, you have unlimited doubt support, you have 20+ tests, you have to give the tests। हर चैप्टर की summary, concepts, class recordings, everything is there। You've seen हजारों recordings। क्या आपको पता है पिछले साल for 10 months we did not take access of crash course। जिसने ज्वाइन किया पढ़ता रहे, that is Vedantu। टेस्ट, परफॉर्मेंस बूस्टर्स, लर्निंग मॉड्यूल्स, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग and class teachers and mentorship sessions, class teachers for your doubts। So if you feel, only if you feel, talk to your parents। घर जाइए, बात करिए उनसे, पूछिए मैम मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा 11th का फिजिक्स हुआ ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा खुद, मेरा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आया। मम्मा पापा बोलेंगे बेटा मैंने दूसरी जगह पैसा दिया है, अभी तुम बोलते हो यहाँ। पता है मुझे डांट पड़ेगी, और मुझे ये भी पता है मिडिल क्लास पर्सन के लिए 8-9 हज़ार देना मुश्किल है। पर ये सोचो कि एम्स की फीस है 8,000 और प्राइवेट कॉलेज की फीस है 80 लाख। यू कैन एक्चुअली गेट आफ्टर योर ड्रीम्स नाउ। टॉपर जो 1200 रैंक है ना, ये इनमें से 800+ रैंक्स, 900+ रैंक्स क्रैश कोर्स से निकली हैं गाइस। सो अगर नहीं कंट्रोल आ रहा है ना, अभी भी टाइम है, गेट इट अंडर योर कंट्रोल, राइट? रेस्ट, यू डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू। बायो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 1 करोड़ है एलिस, यस बायो आई एम देयर। 2 चीजों की टेंशन लेनी है। मैं हमेशा कहती हूँ डोंट डू इट फॉर बायो, डू इट फॉर फिजिक्स, डू इट फॉर केमिस्ट्री।
Yes, and the overall price is very less. Just compare it to the overall price. एक बार मैं आपको शो भी कर देती हूँ one last time before we start the lecture. VD NEET code है, and just in case you want to take it, तो आप ये lecture चल रहा है, just go below it, right? इसके नीचे जाइए, यहाँ पर आइए, दिख रहा है आपको? This is the crash course. Click on this, and buy now. The code will become VD NEET. Don't buy it without the code, because if you have the code, you can join my classes, and most importantly, you can get this off, right? And come to the class. Now, chalo, choice is always yours. आ जाओ, आगे बढ़ते हैं. क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है? अब ये बताओ, सारे बच्चों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर है? सारे बच्चों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर है? 100% क्लियर है सारे बच्चों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी? यस मैम. सारे बच्चों को बी टी लिम्फोसाइट्स क्लियर है? हेल्पर टी सेल क्लियर है? पक्का? यस. यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस दैट वी हैव डन? यू रिमेंबर थाइमस साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी क्लियर है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्लियर है? टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्लियर है? योसिनोफिलिया क्लियर है? क्विक क्वेश्चन टू यू. एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? जल्दी. एलर्जिक रिएक्शन. गुड गुड. योसिनोफिल्स. किसी ने जवाब नहीं दिया इतनी जल्दी. योसिनोफिल्स बढ़ेंगे. एलर्जिक रिएक्शन, टेपवर्म इन्फेस्टेशन, योसिनोफिल्स बढ़ेंगे. विच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी सेल विच हेल्प्स अ बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? व्हाट इज द आंसर? नहीं कार्तिक, नहीं कार्तिक. एलर्जिक रिएक्शन के अंदर योसिनोफिल्स बढ़ेंगे. वेरी गुड. आईजीई बढ़ेगा. सागर आर्या, वेल डन. सानवी श्रीवास्तव, वेल डन. What are the specific type of T cells which are going to? Very good, Avinash. Yesterday also you were performing very well. Helper T cells. The helper T cell. Specific attack or specific antigen will be remembered by which T cell? The specific antigen. Chaliye, Shweta Yadav, I want an answer from you. Specific antigen will be remembered by which T cell? Memory T cell. Memory T cell. One last question. Very good, Ronak Kumar. Let's say one last question in today's class. Tomorrow I'm also going to be taking a test on this topic. One last question quickly. In response to an antigen, which B cell produces antibody? Antibody producing B cell का नाम क्या होता है? Come on, Anushka Soni. What is the name of an antibody producing B cell? B cell. Antibody producing B cell. Sagar Arya is my favorite student for today. Plasma cell. Two students, Sagar Arya, Gian Sharma and Priya. Plasma cell. I have special claps for Ronak. इनको हम effector cells भी कहते हैं. They are the ones which produce antibody. Last question out of syllabus. Let us see whether you can answer or not. मतलब पढ़कर आए हो या नहीं पता चल जाएगा. Antibody का rate of production क्या होता है? चलो. Definitely you can, Ayan. What is the rate of production of antibodies? Anybody? Rate of production of antibodies. How many antibodies are produced per second like that? Fast, let me see. And guys, come on, make sure that you're liking, sharing, subscribing, becoming a part of... Wow, voice of pause. 2000. Darshini and voice of pause के लिए special claps. 2000. ये सारे MCQ questions हैं. I hope आप मेरे साथ साथ you were writing 2000. अब आ जाते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी पे और कैसे ये इम्यून सिस्टम कई बार हमारी बॉडी में कॉम्प्रोमाइज होता है. तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, वेयर आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड? वेयर आर बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस्ड? अविनाश, अनीता, they are produced in the bone marrow. B lymphocytes mature in the bone marrow. T lymphocytes mature in the thymus. Is that clear? No worries, Ashok. Please stop saying sorry. Please pay attention in the class. The immune system includes the primary lymphoid organ, the secondary lymphatic tissues, various cells in the innate and adaptive immune system. B cells का maturation कहाँ होता है? Bone marrow में. Production भी कहाँ होता है? Bone marrow में. T cells का maturation कहाँ होता है? It is in the thymus. थाइमस की एक मुझे क्वालिटी बताओ. चलो देखते हैं कौन सा बच्चा सही जाता है. थाइमस की मुझे एक बढ़िया क्वालिटी बताओ. लेट अस सी. थाइमस की क्वालिटी है द थाइमस इज द वन व्हिच इज गोइंग टू ग्रो till
13 years of age. 13 years of age. उसके बाद it is going to decrease in size and finally it is going to die off. So as the age increases till puberty, till 13-14 years of age it increases, after that it decreases. Good, very good. Reduces in size, becomes small in puberty, it is big at birth. That is a function of thymus. What does it secrete? It secretes thymosin. What does it secrete? Thymosin. Yes everybody. मुझे एक फोटो तो भेजो यार, हाथ में लिया बुक तो मजा आया, एक फोटो भेजो चलो. Yes, perfect. Lymph nodes, आ जाइए. Everybody please send me a photograph if you've got your book. Tag me on Instagram story. Send me a photograph on Telegram. It'll be so nice. How's the book? मैंने भी अभी तक I've not held it in hand. मेरे पास नहीं आई है. Yes, well done. चलिए. Can we move ahead please? Right? आइए. Any background voice? मेरे आसपास वाले ना कोई पार्टी कर रहे हैं, डीजे पार्टी. तो कुछ कर तो सकते नहीं, ऐसे इंडिया इज अ फ्री कंट्री, किसी को मना नहीं कर सकते गाने वाने बजाने से. चलिए आइए. इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. सो यू हैव लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी में होते हैं. आई विल डिक्रीज द ब्राइटनेस अ लिटिल बिट. राइट. गुफरान आप भी मुझे फोटो भेज दीजिए प्लीज. गाइस हाउ इज द बुक? बताया नहीं आप लोगों ने मुझे. Yes. Now can you see the beautiful lymph node? तो lymph nodes होते हैं बॉडी में. Lymph nodes कहाँ होते हैं? They are according to position. So जो गले के नीचे होते हैं उनको सबमैंडिबुलर कहते हैं. क्लैविकल के ऊपर होते हैं. गुड. तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? वेरी गुड कह रहे हो. झूठे झूठे तुमने भी खरीद लिया अभी तक. राइट. क्लैविकल के ऊपर होते हैं उनको सुप्रा क्लैविकुलर कहते हैं. एब्डोमेन में होते हैं उनको एब्डोमिनल कहते हैं. राइट एवरीबडी? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Right? So you have lymph nodes in the body. घुटने के पीछे होते हैं उनको popliteal कहते हैं. There are various lymph nodes in the body. Lymph node क्या होगा? एक कैप्सूल, एक कवर होगा, जैसे संतरे का, अनार का छिलका होता है. Yes? Done everybody? संतरे का, अनार का छिलका होता है. So you have the capsule which surrounds two distinct regions. मेडुला हमेशा कहाँ का रीजन होता है? मिडिल रीजन होता है. कॉर्टेक्स बाहर का रीजन होता है. मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसीज जो फैगोसाइटोस करते हैं, मैक्रोफेजेस कहाँ होते हैं? मेडुला में. MM. So where are the macrophages? M. Medulla. T lymphocytes in the lymph nodes help to destroy pathogens. They are the ones which trap microorganisms or antigens. Right everybody? Spleen. एक spleen होता है. So what does the spleen do? The spleen is on the left side of the body. Spleen is basically a graveyard of RBCs. It's going to, remove the worn out RBCs. See? It is going to clean the blood. It is also a reservoir of RBCs. But apart from RBCs, it is also a reservoir. It's going to store the waste WBCs also, the old WBCs. But sometimes when the body needs it, it's going to release the WBCs. Did you get my point? जो body को जरूरत पड़ेगी, it's going to release the WBCs. Is that clear everybody? Yes, it's going to trap the microorganisms. आपको पता है ये जो spleen होती है ना, ये जाली नुमा होती है. आपने कभी आपने चाय बनाई है ना? वानी मैम आपके घर आएगी तो चाय तो पिलाओगे. तो जब हम चाय छानते हैं, चाय का पानी नीचे आ जाता है. एंड what happens to the चाय पत्ती? What happens to the अदरक? वो ऊपर रह जाता है because जाली होती है ना. That is the reticulate network. रेटिकुलिन एक मेशवर्क टाइप फाइबर होता है, जाली नुमा फाइबर, मेशवर्क टाइप फाइबर. तो वो ऊपर रह जाता है. क्लियर हो? डन. छाननी की तरह छानता है और सामान ऊपर रह जाता है. Is that clear everybody? Write here on the chat section please. It'll be so nice if you could all write here on the chat section. Well done. Now immune system में tonsils बहुत important है. कितने बच्चों को बचपन में यहाँ आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद गला. So see, the body is so smart. The body is so smart. Body ने देख लिया कि भाई ये जो बच्चा है कभी मिट्टी खाता है, कभी चौक खाता है, कभी स्लेट खाता है, कभी नीचे कोई सामान पड़ा होता है. That means majority of the bacteria enter the body through the mouth. Do you agree with me, Sanvi? So body ने बोला यार वो body में जाकर वो गड़बड़ करेंगे. Let us attack them in the throat. So गले में body ने टंग के ऊपर lymph nodes दे दिए. You know what are lymph nodes? WBCs. ऐसे बैठे हुए. So there are WBCs which are sitting on top of the tongue. There
are WBCs which are sitting close to the palate. Palate होता है ना top part of the body, होता है कि नहीं होता? Yes, ये top part है, ये tongue है. So tonsils यहाँ है, फिर ring बन गई, Walder's ring. इस पे भी tonsils थी. Did you understand? That's called the Walder's ring. Lymphatic tissue होगा pharynx पे, lymphatic tissue होगा palate पे, palatine tonsils, lymphatic tissue होगा tongue पे, lymphatic tissue होगा pharynx पे, और ये सब मिलकर एक रिंग बना लेंगे जिसको बॉडी ने नाम दे दिया Walder's ring. Will you be able to remember them? Please write it on your notes section. Pharynx पे होगा, tonsil होगा, right everybody, tongue पे होगा, palate पे होगा, palate, the top part, palate पे होगा, tongue पे होगा, mucosa पे होगा, right? Pharynx पे होगा. It will form a ring. The ring is called Walder's ring and it will not allow anything to enter. But अगर ये ring है, अब इस ring में अगर swelling हो गई, तो क्या ये passage छोटा हो जाएगा? So if it swells a lot, will it be difficult for you to breathe? Everybody, Shiva Kanya, are you understanding? The Walder's ring is very dangerous because if there is swelling on this ring, if there is increased amount of swelling on this ring, will it lead to a lot of difficulty in breathing? 500% yes, the person will not be able to breathe, right? So definitely it's a tonsil ring. It is helpful for the body. It will not allow bacterial infections to enter inside, but if it swells, it causes a lot of problem. Now the topic that you were doing, इसके ऊपर questions आते हैं और majority of the teachers ये करवाते नहीं है, right? Paid lectures में भी कितनी जगह मैंने देखा टीचर्स ये करवाते नहीं है, उसके बाद बच्चे बेचारे एग्जाम में गोल हो जाते हैं. मैं हमेशा एक चीज आपको बोलती हूँ, बेटा अगर सिर्फ बायो का एग्जाम आ रहा होता ना रौनक त्याशा, तो मैं आपके 360 और 360 ले आती. पर बायो सिर्फ स्कोर 300 350 तक लेके जाती है. 600 पार के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए. अगर सिर्फ बायो आ रहा होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती. फिर तो मैं आपको मार्च तक छुट्टी दे देती, बोलती अप्रैल मई में मैं आपके 360 और 360 ले आऊंगी. पर बेटा स्कोर तो फिजिक्स केमिस्ट्री से ही आएगा, रैंक तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही लेकर आएगी. बायो तो सिर्फ क्वालिफाई करवाएगी, रैंक तो फिजिक्स केमिस्ट्री से ही आएगा. यस एवरीबडी, मैंने देख लिया प्रिंसी का मैसेज बेटा. ओके आ जाइए. तो जितनी भी जगह आपकी बॉडी में म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा राइट, लाइक माउथ म्यूकस, वहां पर होता है. मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकोसा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकोसा होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकोसा होता है. 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इज योर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. कैन यू सी दिस? जितनी भी जगह आपकी बॉडी में म्यूकस है, म्यूकस कौन सेक्रेट करता है? गॉबलेट सेल्स. कहां होता है म्यूकोसा? योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज म्यूकोसा, योर डाइजेस्टिव system has mucosa, your urogenital tract has mucosa. It has a mucosa associated lymphoid tissue. Your gut, your intestines have GALT, the gut associated lymphoid tissue. Is that clear everybody? So you have the mucosa associated lymphoid tissue and you have the gut associated lymphoid tissue. So can we move ahead now? Can we move ahead now? Let us come to a disease which is called as AIDS. It was discovered in the world as early as 1981. It was first discovered in homosexual males, right? Because most of the homosexuals of that time used to often do drugs. Now, because they used to do drugs, and that's the time that they used to use the same needle to use drugs. So when the needle used to be used for giving drugs, the needle used to get infected by blood, right? Because where do you add drugs? You add the drugs in the veins. Yes, everybody, you add the drugs in the veins. So they used to get infected by blood, and that is why it used to, cause transmission of AIDS. The full form of AIDS is acquired. You don't get it genetically. It is acquired. But once you acquire the virus, you will have
immunodeficiency. So it is acquired immunodeficiency syndrome. The meaning of the word syndrome is a collection or a group of diseases. It is not just one disease. It is a collection, it is a group of diseases, right? So acquired because the immunity is less, acquired immunodeficiency syndrome. When you have just one problem, it is called a disease. But when you have a lot of problems, a group of diseases or symptoms, it is referred to as a syndrome. For example, Klinefelter syndrome, for example, Down syndrome, for example, Turner syndrome, because you don't just have one problem, but a lot of problems which are there together. There is a virus. This virus is like the COVID virus in being a RNA virus. RNA viruses are referred to as retrovirus, right? It is a retrovirus. The name of the virus is human immunodeficiency virus. The HIV cannot cause disease in pigs. The HIV cannot cause disease in cattle. The HIV cannot cause disease in dogs. It can only cause disease in humans. It's a single-stranded RNA. It will affect the helper T cells. What is the function of helper T cell? The function of helper T cell is to help the B cell. If there is no helper T cell, the B cell cannot produce antibodies. Yes or no, Shashank? If there is no helper T cell, the B cell cannot produce antibodies. Right? Without antibodies, the body's immune system is disabled. HIV cannot cause death. It cannot cause anything. It will only decrease the immune system. If somebody does not have money, it is not this that they cannot go to a mall, they cannot go to a hotel. They can go, but will they be able to eat in that hotel? Will they be able to shop in that mall? Tell me. If somebody doesn't have money, nobody will stop them from going to the mall. You can enter a mall. If you don't have money, you can go to a car showroom. Don't have money, you can go to a big shop. But will you be able to do shopping there? Ultimately, unfortunately, no. Because to do shopping, you require money. Yes, so you can go to the shop, you can see, which is called window shopping, and come back. But you will not be able to buy. Similarly, when somebody has AIDS caused by HIV, it is not that the person will die because of HIV. HIV per se does not cause anything. But HIV will crush the immunity. That person will get pneumonia. That person will get tuberculosis. That person can get common cold, and common cold will not heal. That person will get ulcers. Are you understanding? That person will get some fungal diseases which normal people will not get. Because normal people have good immunity. They can even die of common cold. Are you able to understand? They will die of bacterial diseases, of fungus, because these people don't have a immunity. There is a type of helper T cell called CD4 cell, cluster of differentiation 4. When CD4 cells, normal people have CD4 cells of 2000 in number. But if somebody has AIDS, their CD4 cells become just 200 cells. How many? Just 200 cells. Yes, how many? Tell the number. Just that is when the immunity is crushed.
And a lot of diseases happen, not one disease, a lot of diseases. Normal people have CD4 cells, cluster of differentiation for 2000, but when they come down 1800, 1600, 1500, 1400, 1200, 1100, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200. So before 200 the person is called HIV positive. Once it is below 200 the person is called AIDS positive. Did you understand? Yes, everybody? Did you all understand? Alright, so this is, and you know what is the treatment of AIDS? For AIDS, the person is given a drug which is called ART. Can anybody tell me the full form of ART? Come on. Antiretroviral therapy. You know, this RNA virus has to convert to DNA to infect us. So what do? We stop the conversion of RNA to DNA. We can only prolong the life. Did you understand? Did you understand? We can stop the conversion of RNA to DNA. Antiretroviral against retroviral. Is that clear? That also works in the initial stage. We can stop that conversion. So let us now look at the structure of the virus. Is the speed fine? I've decided to go slow. I've decided to take time because we don't have a lot of syllabus, because this is a very important topic. What is the point? Jaldi mein kara diya, baad mein sab bhul jayenge. That doesn't suit our purpose. Yes, everybody, antiretroviral drug. Lamivudine, zidovudine, didanosine, ये सारे drugs क्या हैं? ये सारे ड्रग्स एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं. HIV एक रेट्रोवायरस है, इसमें RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, मैंने आपको बोल दिया. कैन यू सी 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA? ssRNA. Point number 1, can you see 2 single strands? Blue in color, my favorite color. Can you see protease? And most importantly, can you see दोनों RNA के पास reverse transcriptase है? Very important. Can you see दोनों के पास reverse transcriptase है? What is the reverse transcriptase going to do? Tell me. It is the one which is going to convert RNA to DNA. It is the one. सबसे पहले क्या single stranded RNA? दूसरा point क्या है? It has reverse transcriptase. This reverse transcriptase will be stopped by didanosine, by antiretroviral therapy. So it has enzymes like reverse transcriptase, integrase, protease to integrate with the host genome. If it wants to integrate with human genome, it will require integrase. It has RNA as a genetic material, that also single stranded. It is covered by a protein coat. ये वाला तो भी आपको याद हो गया होगा. Glycoprotein 120, glycoprotein 41. These are the spike proteins, because of which we are able to identify them. अभी कोरोना में देखा होगा आपने. So what are the spike proteins? The spikes because of which they are able to attach to the human body also. Glycoprotein 41, glycoprotein 120, GP. Is that clear? Inner protein होता है P24. Outer protein होता है P17. Very important. P24 and P17 are the proteins. We are able to identify P24, P17, all these things in the ELISA test. Inner proteins होते हैं. समझ आया कि नहीं आया? दमन बिल्कुल clear है बेटा. Screen बेटा. Is that clear? And what are the ones which are to attach lipoprotein spike? GP120, GP41. And GP120 has complementary sequences to CD4 receptor. जाके CD4 पे चिपक जाएगा. CD4 को destroy कर देगा. Just like Thanos, it will destroy it. और empty CD4 के अंदर क्या करेगा? One CD4 is empty. उसके अंदर क्या करेगा बताओ? They have one CD4 के empty को use करेगा as HIV factory. It will replicate inside the empty CD4. Is that clear, everybody? I will take the doubts. It will replicate. So what are the two proteins which are there? P24 and P17. Inner protein P24, outer protein P17. What are the two glycoprotein spikes? GP120, GP41. How many RNA does it have? 2. What are the two? Single stranded. What does it have attached to each single stranded RNA? It has reverse transcriptase. What are the lipoproteins? Repeating for the 5th time. GP120, GP14. What are two proteins? You have an outer protein and an inner protein. What is the inner protein called? P24. What is the outer protein called? P17. GP120, the glycoprotein 120 has complementary structure to CD4. What will it do in the CD4? It will destroy the CD4 and use it as HIV factor. And from there, it is going to destroy the helper T cells.
After destroying the helper T cells, there will be no production of antibodies. Once there is no production of antibodies, the immunity is compromised. Once the immunity is compromised, the person will die of regular diseases. What do you do to stop it? You stop the conversion of RNA to DNA. Stopping the conversion of RNA to DNA is called stopping of reverse transcription. What drugs do you use? Antiretroviral therapy. What are the examples of antiretroviral therapy? Didanosine. What is the example of antiretroviral therapy? Yes, didanosine, zidovudin. Is that clear? No worries, tech. Please buy tomorrow first thing in the morning. But trust me when I say this, one of the most important gifts you can give yourself is of physics and chemistry. One of the most important things you can do for yourself is work hard on physics and chemistry. Leave your biology on me. I am here for your biology, but make sure your physics and chemistry is next level. Right? You just close your eyes, have faith on me. I've been single-handedly teaching bio for 3 generations of biotonians with thousands of them in the top medical college. Just focus on your physics and chemistry, leave your bio on me. And as a elder sister, as a mother, as a teacher, I'm telling you, doing physics and chemistry on your own is not possible. I wanted to learn management. I wanted to learn how do big organizations work. I'm doing an MBA. Am I sitting and doing on my own? I also went to an XLRI college. I paid lakhs of rupees as fees. Right? Did I tell them, no, I am very smart, I am very intelligent, I am a YouTuber, I don't need to do MBA. No, when you want to learn, you have to learn. Are you getting my point, everybody? So make sure that if your physics and chemistry is weak, you identify that weakness at the right time. Last में भी लोग हैं ना, जब 1 महीना बचेगा उसका क्या फायदा होगा? फिर 1 महीने में, 2 महीने में, अभी 6 महीने बचे, अभी वर्क हार्ड करो. यस शांभवी, अभी वर्क हार्ड करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर 6 महीने बाद लोगे, जब 2 महीने बचेंगे, लास्ट के 1 महीने में क्रैश कोर्स लोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा. अब ध्यान से क्लास में सुन लो, ठीक है? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था आ जाओ. So like I told you before also, this is an NCERT diagram. I hope you remember it. Pure NCERT diagram. It is transmitted through body fluids. It can go from mother to fetus. It can go from blood transfusion. Right? From mother to fetus. Is that clear? It can go. It can go from sexual contact. It can go from intravenous contact. It can go in organ donation. It can go in blood donation. It does go through body fluids. ये छुप के कहाँ रहता है मलेरिया की तरह? किस में छुप के रहेगा? Lymph node में जाके छुप जाएगा. Will the body attack its own lymph node? Will the body attack its own lymph node? Because it's hiding there. वो लिवर में छुपा था, ये lymph node में जाके छुप जाएगा. It will go in the lymph node. और वहां क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बनाएगा. It is a RNA virus. It is a retrovirus. Thanks, David. It will form DNA. Then this viral DNA will get into host cell. Is that clear? और फिर एंटर कर जाएगा मैक्रोफेज के बाद टी लिम्फोसाइट्स में. एंड टी लिम्फोसाइट्स को मार देगा. मारकर क्या बन जाएगा? आपने आजकल मूवीज नहीं, मे बी न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज शॉर्ट्स वगैरह में देखा है. चोर ने चोरी की, खिचड़ी बनाने के लिए रुक गया. चोर ने चोरी की, जिसके घर गया था उसके घर सो गया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया. देखा है? चोर ने चोरी की, बाथरूम में जाके नहाने लग गया एंड गॉट कॉट. देखा है ना, सुना है? Yes, so yes everybody. So what I'm trying to say is, इसको क्या बना लेगा? होम. इसको मार देगा और यहां पे फिर प्रोजेनी वायरसेस को जन्म देगा. It will affect the lymph nodes. So viral RNA will affect the normal cell. It will go inside the animal cell. It will produce DNA by reverse transcriptase. It will incorporate into host cell. Host cell के अंदर चला जाएगा. Then it will go to the helper T cell, T lymphocytes, and वहां पे नए वायरस प्रोड्यूस करेगा.
right, will produce new viruses inside the helper T cell. Is that clear, everybody? How does it spread? It spreads through sexual contact with infected persons, spreads through transfusion of blood and blood products, sharing of infected needles from infected mother to her child through placenta. So, ELISA is a screening test. ELISA is not a confirmatory test, 100% MCQ question, screening test. Right? To see whether somebody has AIDS or not, a screening. The confirmatory test is when antibodies are produced. Right, everybody? That is the Western blot test. जब बॉडी एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती है, इसमें हम सिर्फ प्रोटीन डिटेक्ट कर लेते हैं. आपने P18, P24 पढ़ा है ना? 18. इसमें हम सिर्फ प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं. एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. बट कंफर्मेटरी टेस्ट में वी हैव टू फाइंड आउट एंटीबॉडीज. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Right? Educate people about AIDS, especially as would-be doctors tomorrow. Avoid sexual contact with infected individuals, disposable syringes and needles, controlling drug abuse, and making blood bank safe because so many people require blood transfusions. Right? एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ बेटा. अगर आपको लगता है कि आई डोंट नो, मैं शायद KVPY करूँ, शायद साइंटिस्ट बनूँ, शायद कुछ और करूँ, एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स में 99% नंबर लाने की कोशिश करो. CBSE टर्म 2 क्लास 12 का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? अनलिमिटेड क्लासेस माइक्रो कोर्सेज के फॉर्म में मिल जाएंगे, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलेगा, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी जब तक आप देखना चाहो. कोड याद रखिएगा, VD Pro, and this entire पूरा टर्म 2 is available एंड तक, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होते. आप डाउट्स पूछिए, रेगुलर क्लासेस में आइए, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, MCQ क्वेश्चंस होंगे, माइक्रो कोर्सेज होंगे, मॉक टेस्ट्स होंगे. जस्ट डोंट मिस दिस. इट्स रियली रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल. सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए हैं. जहां से आज की क्लास खत्म हुई है, मैं कल वहीं से स्टार्ट करूंगी. I've also shown you my regular sessions. Please don't miss this. जाने से पहले एक बार लिंक्स आपको जरूर दिखा देती हूँ मेरे बच्चों. So come here. अगर आपने पूरी CBSE की तैयारी करनी है, यहाँ आइएगा. क्रैश कोर्स इज लाइफ चेंजिंग. मतलब इट विल चेंज योर लाइफ बेटा. जो अटके हुए हो, जो स्टक फील कर रहे हो, जो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जस्ट go get the crash course. Seriously, आपको लगेगा यार this is one of the best decisions of my life, क्योंकि आपके रैंक बूस्ट करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है. डाउट के लिए कितना आसान है पता है? फोटो खींचिए, डाउट भेज दिया, ले लो आंसर फटाफट से. टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं, टेस्ट्स देने हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टेस्ट देने में, एवरीथिंग. एंड वेदांतु ऐसा है जो एंड तक आपका हाथ पकड़ेगा. मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता, सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं. कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे लिख दो. गेट इन टच विद मी. यू विल आल्सो गेट माय क्लासेस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग. इट्स सो इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस. इनफैक्ट क्रैश कोर्स से भी ज्यादा ये ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ थियरी हो जाएगी, आप बोर्ड में अच्छा कर लोगे. प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल्स की, जिसके लिए ये बहुत जरूरी है. अप्लाई द कोड. सी यू टुमारो, सेम टाइम, same place. Right? So apply the code and come to the regular sessions. Take care guys. Bye. It's here only Aman. Link यहीं पे available था. Book का link भी यहाँ पर available है. ठीक है? यहाँ पर है, देख लो एक बार. See? ठीक है? Take care. Bye बच्चों. Bye.